Now, I would like to introduce our Honorable President and Chancellor of Chhatrapati Shivaji Maharaj University, Dr. Keshav Badaya Sir, a renowned educationalist and visionary. Dr. Keshav Badaya Sir is a founder member of the St. Wilfred Education Society and as the incumbent secretary of the society. He has led the foundation of a number of education institutes. Under his leadership, the St. Wilfred Education Society started its journey from Jaipur, Rajasthan, spreading to Ajmer and on to Mumbai, Maharashtra. The society has established a number of schools, colleges, and hospitals in these cities and beyond. Dr. Keshav Badaya Sir has successfully reinvigorated the education scene of India by focusing on the core prospects of best quality holistic education. Under his fine leadership, Chhatrapati Shivaji Maharaj University has grown at an outstanding pace and now stand in the front row of the higher education of Maharashtra. We are proud to have Dr. Keshav Badaya Sir as the Honorable President and Chancellor of Chhatrapati Shivaji Maharaj University. We are honored as our keynote speaker is here. I request Sir to please come up on the podium and inspire us. A big round of applause for President and Chancellor of Chhatrapati Shivaji Maharaj University, Dr. Keshav Badaya Sir. First of all, I would like to welcome all of you on behalf of CSMU Chhatrapati Shivaji Maharaj University. This is the first day of your university life, which is starting, and you need to have a big journey ahead. So this journey of your life will start with this program, and you have listened, you have heard, you have met the foundation, the pillars of this organization, including Vice Chancellor, Registrar, Deans, HODs, faculty members, and every stakeholders of the university. University is all about you. University is all about academics. University is all about the holistic development of all the students. As rightly said by Honorable Vice Chancellor Sir, you all have come with certain expectations, with certain dreams. Your parents might have decided certain dreams for you. You might have decided certain goals and objectives for you. And we are here to help you out to chasing your dreams. I always believe that everyone has the right to dream. And dreams should always be big. We have the right to see all the dreams. And when you start chasing your dreams, nothing is impossible. Everything is possible. During this course, due to you, there will be a time when you will be encountering with failures. You will think this is not possible for me. You will think I may not be in a position to top my class. You will feel that I'm not made for music. You will feel that this sports is not happening with me. I don't find this is a good approach. Defeat is the way to success. I have never come across in my life with any person who has never encountered defeat. हार और जीत ये हमारी जिंदगी के अहम पार्ट है। वो जीतेगा कैसे जो कभी हारा ही नहीं, वो जीतेगा कैसे जो कभी गिरा ही नहीं, और वो जीतेगा कैसे जो गिर के कभी उठा ही नहीं। हमें गिरना भी है, गिर के सीखना भी है, और सीख के उठना भी है, उठ के दौड़ना भी है। एक स्टूडेंट था,
जो स्कूल की मैराथन में हमेशा पार्ट लेता था और हमेशा दौड़ लगाता था, सोचता था कि मैं दौड़ लगाऊंगा तो मैं जीत जाऊंगा। और उसने कम से कम 20 बार मैराथन दौड़ने का सोचा, लेकिन एक बार भी वो रेस कंप्लीट कर नहीं पाया। ही हैड टू लीव, क्योंकि उसको बेसिक्स पता ही नहीं थे कि मैराथन रेसेस कैसे जीती जाती है। एक दिन उसके गुरु ने उसको समझाया कि तुम सिर्फ एक संकल्प करो कि तुम अपनी रेस कंप्लीट करोगे, तुम बीच में नहीं छोड़ोगे। उसने इस बात का संकल्प लिया, वो गिर के फिर उसने उठा, फिर गिरा, फिर दौड़ा, फिर चला। उसके पांव जवाब देने लगे, लेकिन उसको गुरु की कही हुई बात याद रही और उसने अल्टीमेटली उस रेस को पूरा किया। वो रेस में हार गया, लेकिन वो जिंदगी की रेस में जीत गया, क्योंकि जो रेस उसने कंप्लीट की उसे यकीन हो गया कि वो ये रेस कंप्लीट कर सकता है। एंड लेटर ऑन उसने अपने आप को इम्प्रूव किया। ऐसे बहुत से मौके आएंगे जब आपको लगेगा कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, आई एम नॉट मेड फॉर दिस, मुझसे नहीं हो पा रहा है, दिस इज गेटिंग वेरी टफ फॉर मी। और ऐसा सिर्फ आपके साथ अकेले के साथ ही नहीं होगा, ऐसा हम सबके साथ हुआ है, ऐसा हम सबके साथ रोज होता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर हमने सिर्फ सोचा और ये संकल्प लिया कि जो टारगेट्स हैं वो मुझे हासिल करने हैं, तो जैसा हमारे प्लेसमेंट सर ने कहा कि 24 लाख का पैकेज, 30 लाख का पैकेज, 50 लाख का पैकेज, 1 करोड़ का पैकेज, क्यों हम 50 लाख के पैकेज की सोचें? यू कैन थिंक अबाउट 1 करोड़ पैकेज, यू कैन थिंक अबाउट गिविंग जॉब्स टू 1 लाख पीपल। क्या मुश्किल है? इस दुनिया में जितने एंटरप्रेन्योर्स हुए हैं, शायद उनको खुद पे यकीन था। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स वो लोग हैं जो कि एजुकेशन में बहुत अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने सपने बड़े देखे, और सपने बड़े देखने के साथ एक चीज बहुत जरूरी है, वो है परिश्रम, मेहनत, कंटिन्यूअस एफर्ट्स। सो दीज कंटिन्यूअस एफर्ट्स can take you to the destination. ऐसा कोई मुश्किल रास्ता है, ऐसा कोई मुश्किल रास्ता नहीं है जो आपको अपनी मंजिलों तक ना ले जाए, और ऐसी कोई मंजिल नहीं है जिस मंजिल को पहुंचने के लिए मुश्किल रास्ते ना आते हों। Traveling is not a problem, destination is important. When you reach to your destination, you will see, you will enjoy the fruits of your hard work. We believe in yourself, you believe in yourself, your teachers believe in yourself, your parents believe in yourself, the nation believes in yourself, the youth has the ample power, and this is the time when India is shining. This is the time when everyone, every country is looking forward towards India. We have a fertile mind, we have the opportunity, and this 3 years, 4 years or 5 years of your student life in this institute will definitely transform yourself, provided you proactively involve yourself in the classes, in the lectures, in all the events, in all the programs, whether it is sports, co-curricular activities, seminar, conferences, debate, everything, because that all makes our own personality. You need to work hard on your communication skills, you need to work hard in grooming your own personality. You should be very focused in whatever you are learning. Your fundamentals should be strong. You should learn, and I can assure you that all the teachers are experienced teachers.
And teachers can only give when you should have the aptitude to take it from your teachers. Compel your teachers to work hard. Compel your teachers to get prepared. Come with learning approach. Come to learn. And when you learn, you can earn anything. So I will not take much of your time. I would like to congratulate you. You have chosen this university, and we assure you from our team, from all the stakeholders, that we will try to do whatever best is possible from us, and we all can make this university a very good university in the country and across the globe. And this can never be possible without you. We all have to move forward in this journey along with you. Always believe in yourself. So, हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है. हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है. जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा. अगर हम ठान लेंगे और हम उस रास्ते पे चल पड़ेंगे, nothing is impossible. In the times to come, our teachers will explain you how to go about in your course curriculum. कुछ confusions भी होंगे जब हमने ये courses लिए हैं. कुछ दिन के बाद we start realizing कि मैंने शायद गलत course ले लिया है. मैं शायद इस कोर्स के लिए बना नहीं हूँ. मैंने मेरे फ्रेंड्स के कहने से ले लिया, मैंने मेरे पेरेंट्स के कहने से ले लिया. दिस इज द टाइम. आप कुछ दिन अपने कोर्स को जज करिए, अपनी कैपेबिलिटीज को जज करिए, अपने इंटरेस्ट को जज कीजिए, एंड ए डिसीजन इज नॉट रॉन्ग अनलेस वी मेक इट, अनलेस वी प्रूव इट रॉन्ग. कोई डिसीजन जो हमने लिया है सोच समझ के लिया है, अपने फ्रेंड्स के कहने से लिया है, लेकिन अल्टीमेटली इट वाज अवर कॉल. वी टुक दिस डिसीजन. सो वी विल आस्क यू टू गिव टाइम टू योर डिसीजन. एंड थैंक यू ऑल द पेरेंट्स who actually made this event successful. Without you this would not have been possible. All the students who came here and made this event successful. Our chief guest from IBM, he gave inputs about the company and the collaborations with IBM. We are in the process of collaborating with foreign universities. You will be having the opportunity to visit foreign universities as well if you wish. You can take part in any sports activities. And this is my suggestion to you, all of you, that take part in, apart from academics, take part in any of the activities. That is definitely going to help enhancing and developing your own personality. So once again, on behalf of CSMU, I welcome all of you, and this journey will be very successful for all of us. Thank you very much. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत.